पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, जिंदगानी लाखों की बनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा। ये संगम का सुहावना समय, वो अच्छा, वह हमारा भविष्य, जो हम देवी देवता पद को पाएंगे वो क्वेश्चन करते हैं। हाँ, कौन से दिन अच्छे हैं? ये अच्छा क्यों? देवी देवता बनेंगे, प्रालब्ध पाएंगे, सतयुगी या बनेंगे, वो नहीं अच्छा और ये अच्छा क्यों? ये ठीक बात है कि ये दिन उस दिनों से भी अच्छे हैं। क्यों? कि कमाई इसमें करते हैं। वो तो खाएंगे, खाते 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 फूट जाएगा। यहाँ तो भरते हैं ना, तो इधर तो भरते रहते हैं, तो भरने के दिन अच्छे है ना। और यहाँ हमको बाप का संग मिलता है, उसके साथ ये हम अपना सौभाग्य बनाते हैं। तो ये सौभाग्य बनाने के पीछे तो सौभाग्य की प्रालब्ध पाएंगे। 16 कला से फिर 16 कला कमती पढ़ते पढ़ते 14 कला होते जाएंगे। तो वो तो हुआ खाते खाते रहना, और ये है अकाउंट में जमा करते रहना। तो ये जमा के दिन अच्छे हैं, जो हम अकाउंट में डालते भरपूर होते जाते हैं, और बाप के संग के दिन है। तो ये दिन बहुत मीठे हैं जो अभी गुजर रही है, उसमें भी अभी के प्रेजेंट। क्यों? कि कमाई के दिन में भी, इस संगम में भी ये टाइम कमाई का है। संगम का सारा टाइम भी आगे चल कर तो विनाश का जब चलेंगी तो उसी टाइम थोड़ी बैठ के ऐसे सुन सकेंगे, कमाई कर सकेंगे, नहीं। कमाई का ये अभी का टाइम है, ये जो बीच का थोड़ा टाइम है, इसी में हम ये कमाई कर सक रहे हैं। इनके बाद दिन और भी खराब होते जाएंगे, जिसमें हम बैठ कर करके ऐसे सुने करे मुश्किल पड़ता जाएगा। तो ये सभी बातें समझने की हैं, और इसमें ये अभी प्रेजेंट हमारा एक एक दिन जो बीतता जा रहा है, ये सब सुहावने दिन है। संगम में भी ये सुहावने दिन है। क्यों? कमाई के दिन है ना। पीछे आगे चल कर करके कमाई नहीं होगी, फिर जो अपना स्टॉक अभी जमा रखा ना, तो उसी टाइम पर भी उसी से काम लेना पड़ेगा ना। जितनी जितनी जिसकी धारणा होंगी, तो उस धारणा को फिर उसमें लगाना पड़ेगा, जितनी ताकत होंगी। तो ताकत तो अभी जमा करते हो नहीं, तो ये दिन संगम में भी अभी के दिन प्रेजेंट, तो उसी दिनों में जिसमें हम ये ऐसे कमाई करने को कर रहे हैं। तो ऐसे संगम के सुहावने दिनों को होते नहीं रहना, ध्यान रखना है। जब कहते हो कि नहीं ये वहाँ प्रालब्ध से भी ये दिन अच्छे हैं, तो इस दिन से हम इतनी कमाई करते हैं। और गाते भी ऐसे शास्त्रों में भी है कि भाई देवताएं भी इच्छा करते थे मनुष्य जन्म की, परंतु देवताएं क्यों मनुष्य जन्म की इच्छा करते थे? ये कहने की है, ऐसे नहीं हम वहाँ कोई इच्छा करेंगे इसकी। हमको तो याद भी नहीं होगा कि हम ऐसे थे, ये ऐसा प्राप्त किया, डिटेल तो नहीं होगा ना। भाई अच्छे कर्म किया, जैसे कॉमन होता है कि मैंने अच्छा कर्म किए हैं तब से फल पाया है। परंतु ये अभी तो जानते हैं ना, ये अभी का अंतिम जन्म, इसमें हम बाप के द्वारा कैसे ये अपना सुहावना दिन बिताया, अर्थात ये अपना प्रालब्ध ऊंची पाई, इस दिनों की वो भी इच्छा रखते हैं।
तो इस मनुष्य जन्म की ये अंतिम। रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, ऐसी ज्ञान मुरली सुनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरिया सुनाई तूने। Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. Today is day 30th. So today is the last day of the June last month. Smriti, Swarup, we had wonderful experience and today we will wrap up and enter into new series. So let's listen to Mohini Didi. Om Shanti. We spend whole month listening, looking, practicing, doing homework to become Swarup, to become embodiment. At least 5 times we do traffic control. At the same time do emerging your eternal form. How many times we hear every day we do drill with Baba, right? But that should be visible. Not only that, any minute I want to do, I should be able to do. But if I am not doing during day very often, then it will remain like I know in the intellect, but stage won't be created. And what Baba says, what we will need in corporeal stage, original stage, or bodiless stage, is very, very important. Different circumstances, situations will require for us to be more and more into this eternal stage where you will be completely beyond, completely above. Not affected by anything. Now, for every little thing, we are sensitive, right? Because of body consciousness. Because there's not enough practice of being in my eternal form. And then we go into my original form of a divine deity. Baba describes in the Murli this time that how Mama had deity form, that divinity was visible. Same it has to be in us also.
Mm. We give knowledge, so we are instruments. So as instruments, what should be my form? Divine form, no? And in that form, everyone's love will emerge. And also respect, regard, Baba said. So as much with the practice of thinking of what I was originally, a deity, divine. I am pure, loving, divine being, deity. Now this you have to sit and think, or take 5 minutes at least, few times a day, and feel the vibrations from within. Like sometimes I just feel the deity within, and I'm feeling the vibrations. One becomes very cheerful. And then there is love which emerges in the hearts of others, and respect. Generally, there is always this whole thing of how much I am loved, how much I am respected. It depends on us, right? We can't tell everyone, please love me, respect me, no. And if they don't, then my self-respect goes down. But if you are ascending, if you are in your original stage, then what emerges in everyone's heart is love and respect, because the divine, the purity. So we want to move forward together, right? No one wants to be left behind. But this is also the definition of efforts, no? Internal efforts. Efforts are very, very important, right? Not past your day, even if we have to do, some have jobs, karma yoga, taking care of yagya. We all have to do it, but while doing it, it's not I have sit and I am like goddess, and when I get up, I forgot. And that's why this morning Baba said, you should not get angry, because then you defame Baba's name, and that becomes sinful action, and there has to be punishment. And punishment is like, it's like you are seeing the grapes, but you can't reach. So you really want it, but it doesn't happen. Punishment is not always beating or physical way we think of punishment. But punishment is where internally your pure thoughts are not being fulfilled. You attempt for certain stage, you attempt for certain type of pure divine intellect, but you don't feel it. And the worthiness of the self, Baba is making us worthy, right? And as much I feel worthy, that closeness with Baba. I remember when I came to Baba, Brahma Baba will call few of us and say, children, you also tell, not advise, but give your opinion.
And I remember saying, but we are so young, why Baba? But Baba was creating not only self-respect, but quality, power to discern. Be child and master. Today I was remembering one of the main practice. Baba said, and then Didi Mohini used to say, child and master. Listen everything as a child, and when you have to act, be a master. Quite a good balance, actually, to be child and master. So, like you remember many beautiful teachings from Baba. So Brahma Baba gave us like we were equal to him. Here also we try, but people, because of lack of self-respect, they don't want to feel that closeness. So stay in wherever I am. I don't want to go higher than this. It's also somewhere you are punishing yourself. That means there is somewhere lack of disobedience, lack of obedience. Today Baba said, you promise and then you disobey, so there is punishment. So I was thinking, what kind of punishment? It's very simply, you are not able to ascend, you're not able to go beyond or be what you want to be. Somewhere deeply, I have to pay attention that when I listen to Murli, I am promising to Baba, yes, Baba, because it's not only I'm listening, I'm reading to others. So it's a promise I am making, isn't it? So I have to follow that properly. So deeply within this, very simply, just practice these two forms. And from there will emerge, original is worship worthy. And as Mama said, confluence age, a Brahmin life of studying and earning income. Studying and earning income. How much in the morning when we read Murli, listen Murli, then we revise Murli, we write points of Murli. We studying. We're not only reading Murli, right? We're studying Murli. Like a lawyer has studied law. So at the right time, right point, he will come up with. Same as our intellect will have all beautiful points for my own self to practice. And at the right time, able to help other souls also when we share these points with them. So even if we are kind of closing this month for Smriti Swarup, but actually it's not closing, it's becoming a permanent chapter in my life where I will pay more attention now. Today, whole day, so many times, beautiful Smritis emerge. So there is a lot of joy, happiness. And then today Baba said, the best service is to give happiness to others. Make everyone happy. So, Smriti Swarup, each one of us, we have to get this certificate and pay attention more. Practice, right?
That's how we become complete and perfect. Om Shanti. Om Shanti. So now I would like to invite our two angels, Sister Judy and Sister Gayatri, and they will just share for the whole month, and then we'll introduce you for next month's series. Welcome. Om Shanti Bhumika, Om Shanti Avyakti Parivar. That was so nice, Mohini Ben. I love this point about practice and becoming, spending time like that. So friends, sisters and brothers, here we are. We're at the end of June, and we have spent these past 4 weeks with 4 powerful ancestor souls, with Dadi Janki, Didi Ma Mohini, Dadi Gulzar, and Mama. You know, we've listened to segments of talks they gave, but really that it wasn't the talks so much that inspired our love and respect, or it wasn't just their talks. It was just being in their presence that lifted us, sharing drishti, accepting totally, feeling their good wishes for us. So how were they able to uplift us like this? It was their Smriti. Because they were embodiments of awareness, because they were soul conscious and connected to Baba, the atmosphere around them, the words they spoke, filled us with love and faith and hope in ourselves. They kept their hearts clean. They kept their minds filled only with elevated thoughts, thoughts of their fortune, thoughts of their bhavana, thoughts of and feelings of belonging to God, experiencing their right to happiness. They didn't let their minds wander outside or be influenced by others. They followed Baba's Srimat and showed us how to become those deities, those souls who are most rare in the whole world, most rare in history. You know, it's easy to get caught in praising these ancestor souls, in admiring how great they were. But what would they want us to do? They wouldn't want us to praise them. Ange. Cela voudrait dire qu'on est des dévots. Elles veulent que nous soyons, qu'on soit comme elles. Alors, depuis qu'on a commencé ce projet, depuis quelques mois, moi, j'ai compris de moi-même que mon intérieur, mon ivresse intérieure, est-ce que je suis enivrée de ma fortune? Est-ce que j'ai des sentiments purs à l'égard de toutes les âmes? Est-ce que j'ai un cœur propre? Est-ce que je m'assure que mon bonheur ne peut pas m'être enlevé? C'est ce qu'elle voudrait que l'on fasse. Parce que quand on fait cela, quand on devient les incarnations de la conscience la plus élevée, on deviendra des instruments très élevés pour la tâche de Baba. Et notre vœu, c'est qu'on continue de pratiquer les
Smriti Swarup, même si on détourne l'attention vers un programme de juillet. Om Shanti. Merci Judy, c'était très beau, dit Gayatri. Et moi aussi, j'aimerais qu'on continue d'explorer la profondeur Smriti Swarup et surtout en relation que ça veut dire être l'incarnation du souvenir aussi. Et comment ça fonctionne à toutes sortes de niveaux et comment les âmes ancêtres l'ont utilisé dans leur vie. C'était comme faire une tapisserie des temps anciens. Il y avait beaucoup d'efforts et que tout avait du sens et de comprendre c'était quoi l'incarnation de la connaissance. Je voudrais juste attirer l'attention sur la famille, sur un poème. Quelqu'un qui a envoyé un poème et elle va lire le poème. Attention, comment est-ce qu'elle a passé à travers. Je les vois tous à travers Daddy Janki et vice-versa parce que elle a tout vu à travers Daddy Janki, mais Maman nous a montré comment. Elles étaient toutes, faisaient beaucoup d'efforts intenses et suivaient Baba dans ses pas. Maman était toute douce et elle avait beaucoup de vertus, d'amour, de douceur et de grâce. Et elle suivait Brahma Baba et tout le monde voulait faire comme elle. Dadi Gulzar, elle était l'incarnation de la paix et de la légèreté de ses paroles. Il y avait les bénédictions de Baba et ses titres. Didi Mohini était en conscience d'âme, était en relation avec Parakashmani et elle était très proche à la tête du Yaga pendant longtemps. J'ai expérimenté son attitude. Cette attitude, je l'ai expérimentée à ma première visite à Madhuban. Et Dadi Janki, elle était infatigable, un serviteur infatigable, et elle était experte à utiliser son intellect divin. Elle barattait, c'est Branda Iren qui envoyait le message. Et je crois qu'elle a bien fait en tant que Smriti Swarup, ce qu'elles étaient. Chacune d'entre elles avait cette conscience et comment elles avaient l'incarnation de cette conscience dans leur vie. Et moi-même, je voudrais remercier chacune des âmes, et j'appelle ça des bénédictions des âmes ancêtres. Et c'est ces ancêtres qui nous ont aidés et ces sœurs sont incognito et je vous donne cette bénédiction. Votre spécialité d'avoir un intellect divin et de vision divine a fait en sorte que Smriti Swarup soit un très grand succès. Vous étiez celles qui ont apporté les ensembles ancêtres en vie et qui a donné à la famille d'Avyakti Parivar d'expérimenter leur présence vivante. Vous avez passé du temps visualiser comment on pourrait les visualiser avec beaucoup d'honnêteté et et voici ce que j'ai vu. Daddy Janki vous aurait donné une caresse et elle aurait mis son front sur le vôtre. Elle vous aurait donné un drishti aimant. Didi Mohini vous aurait pris votre visage dans ses mains et vous aurez embrassé sur le front, sur l'âme. Et Dadi Gulzar vous aurait embrassé dans un silence si profond que vous auriez retrouvé le confort de la caresse
douce papa. Et maman, elle vous aurait placé dans son giron d'amour et aurait empli votre cœur de beaucoup d'amour, l'amour que maman pouvait donner. Judy et moi, Gayatri, imaginons cette fortune qui a été inscrite dans votre destinée. Merci, 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 chère sœur incognito. Et maintenant, nous allons aller voir la vidéo de nos âmes ancêtres et nous allons observer ce magnifique silence de la méditation collective. Smriti Swarup, l'incarnation de la conscience. की मूरत थी ऐसी लगती थी वो अपनी सी था उनके लिए अपना ये जहां। सीधी सादी भोली सी दुनिया की थी वो दादी। लेती है नाम उनका हर सुबह हमारी दादी जानकी हमारी दादी जानकी। अब घर जाना है कि अब घर जाना है अब घर जाना है कि अब घर जाना है आदि अंत का मंत्र यही है सबको यही सुनाना है अब घर जाना है कि अब हृदय को मोह कर हम सबके तुम चली गई अंबर के पार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारी दादे गुलजार ओ मीठे दादे गुलजार ओ प्यारी दादे गुलजार ओ ममता तेरी इतनी गहरी सारा जग समा गया। जो भी आया गोद में तेरी हर गम भुला गया। ममता तेरी इतनी गहरी सारा जग समा